Hello children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, Stars and the Solar System. Warm-up exercise. You wake up and then glance out your window to see the first rays of dawn. By lunchtime, the sun is high in the sky. As you sit down to dinner in the evening, the sun appears to sink below the horizon. Although it seems like the sun moves across the sky, it is Earth that is moving. Have you read the news report on solar eclipse? Why are some people scared of eclipse? Does eclipse cause any harm to living beings? There are so many beliefs related to eclipse. Are there such beliefs in your locality? Does anything happen to the sun during eclipse? But what happened in night? Where is sun now? You see the entire sky dotted with countless stars. देखिए रात को सन कहाँ चला जाता है? रात को आपको काउंटलेस स्टार्स नज़र आते हैं रात में, है ना? आपका ऐसे लगता है आपको जैसे कि सन का जो अपीयरेंस है आपका हाई होता है पहले, फिर नीचे आपका डाउन चला जाता है, आपको ऐसा लगता है कि वो हराइजन में सिंक हो गया. बट एक्चुअल में क्या है कि आपका जो सन जो है वो मूव नहीं करता. इट इज अर्थ विच इज मूविंग. But what happened at night? Where is sun now? You see the entire sky dotted with countless stars, some bright and some not so bright. The moon is the brightest object in the night sky. The stars, the planets, the moon and the many other objects in the sky are called celestial objects. देखिए दिन के टाइम पे आपको सन नज़र आता है, बट रात में ये कहाँ जाता है? रात में हमें स्टार्स नज़र आते हैं, कुछ ब्राइट होते हैं, कुछ ब्राइट नहीं होते. मून जो है ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है. तो आपके जो स्टार्स, प्लैनेट्स, मून और बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो आपके स्काई में होते हैं उन्हें हम कहते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स. The moon. Observe the moon continuously for several nights, preferably from one full moon to the next. Make a sketch of the moon every night in your notebook and note from the day of the full moon. Also note every day the part of the sky, east or west, in which the moon is seen. How many different moon shapes have you seen? Have you seen the moon look round or maybe like a half circle? Although the moon looks different at different times of the month, it doesn't change. What does change is the way the moon appears from Earth. These changes are called phases of the moon. Figure shows the various phases of the moon. अच्छा आपने क्या करना है कि आप ना को मून जो है वो कंटिन्यूसली कई रात तक आप उसको ऑब्जर्व करेंगे एंड प्रेफरेबली वन फुल मून से नेक्स्ट तक. तो आप देखेंगे कि आपको उसको आपको मून के डिफरेंट शेप्स नज़र आएंगे जो मून के फेजेस होते हैं, राइट? तो इसमें आप देखिए नेक्स्ट पेज पे आपको वेरियस फेजेस दिए गए हैं मून के. सी These are the various phases of the moon. Light from the sun. The moon does not produce its own light. The light that comes to earth from the moon is reflected sunlight. Also, just as half of earth experiences day while the other half experiences night, one half of the moon is lit by the sun while the other half is dark. मून अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं करता, ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. अच्छा जो अर्थ का हाफ पार्ट है वहाँ पे दिन होता है, हाफ पार्ट में नाइट होता है. यानी कि जो एक हाफ है मून का वो आपका सन से लिट होता है जबकि दूसरा हाफ आपका डार्क रहता है. एक्टिविटी 1. Take a ball pointed half white and half black. Let two students go to an open space where there is bright sunlight. Draw a circle there and make a student stand at the center of the circle. Imagine that the student is the earth. Divide the circumference of the circle into 8 equal parts and mark them. Ask the other student to take the ball and stand at each division of the circle one after another. Ask this student to hold the ball in such a way that the part which separates the black and white portions of the ball is vertical as shown in the figure. अच्छा आप क्या करना है, एक बॉल लेना है जो पेंटेड हो गया आपकी आधी वाइट आधी ब्लैक. फिर दो स्टूडेंट्स को आपको ओपन स्पेस पे लेके जाना जहाँ पे ब्राइट सनलाइट हो. एक सर्कल ड्रॉ करना है एंड स्टूडेंट जो होगा वो सर्कल के आपके सेंटर में होगा. इमेजिन कीजिए कि ये जो स्टूडेंट ये अर्थ है, फिर आपने डिवाइड करने हैं सर्कल के सर्कमफ्रेंसेस को 8 इक्वल पार्ट्स में. ये देखिए इस तरह से, राइट? फिर दूसरे स्टूडेंट को कहना है कि बॉल लेना है और वो हर डिवीजन पे खड़ा हो जो आपके 8 डिविजन्स बनाए गए हैं. आस्क दिस स्टूडेंट to hold the ball in such a way that the part which separates the black and white portions of the ball is vertical as shown in the figure. The white portion of the ball must always face the student at the center of the circle. Let the student at the center observe the white part of the ball in the hands of the other student who is shifting his position from one division of the circle to another. The student holding the ball moves around through the different divisions of the circle. अब जो white portion है ball का वो student को face करना चाहिए center of the circle में. फिर ये जो student है जो आपका सेंटर में वो वाइट पार्ट जो है बॉल का उसको ऑब्जर्व करेगा जो दूसरे बच्चे के हाथ में, और इसकी पोजीशन चेंज होती रहेगी क्योंकि ये हर जो आपके इक्वल पार्ट्स हैं उनमें ये मूव करता रहेगा.
Then the student standing at the center should observe the ball and sketch how on each stance he views the part of the ball where the sunlight is falling directly. Compare these sketches with the various shapes of the moon. अब जो बच्चा सेंटर में है वो ऑब्जर्व करेगा कि कितने पार्ट में जो है सन की लाइट पड़ रही है. तो ये जो आप स्केचेस आप बनाएंगे, ये आपके जो शेप्स ऑफ द मून है, ये आपके उससे आप कंपेयर कीजिए कि ये उसके जैसे हैं या नहीं हैं. The moon surface. The moon is a fascinating object for poets and storytellers. But when astronauts landed on the moon, they found that the moon surface is dusty and barren. There are many craters of different sizes. It also has a large number of steep and high mountains. Some of these are as high as the highest mountains on the earth. देखिए मून के सरफेस पे जब एस्ट्रोनॉट गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे तो बड़े बड़े क्रेटर्स हैं, यानी बड़े बड़े गड्ढे हैं. इसका जो सरफेस है डस्टी और बैरन है. इसमें नंबर ऑफ स्टीप और हाई माउंटेन्स हैं, और कुछ तो इतने हाई माउंटेन्स हैं जितने कि आपकी अर्थ पे होते हैं. Expedition to moon. It was Soviet Union that began the first expedition to moon 50 years ago. It began with the launching of a Sputnik in October 1957. Later, America, Japan and European Space Agency conducted expedition to moon. It was America that sent men to moon for the first time. In 2008, India also started its expedition to moon with its Chandrayaan project. तो देखिए सबसे पहले मून पे जो एक्सपेडिशन शुरू हुआ था सोवियत यूनियन ने शुरू किया था. उन्होंने सबसे पहले स्पुतनिक लॉन्च किया था. देन उसके बाद अमेरिका, जापान एंड यूरोप स्पेस एजेंसी है, उन्होंने भी एक्सपेडिशन कंडक्ट किया मून पे. इसके बाद अमेरिका था जहाँ से सबसे पहले जो आपके एस्ट्रोनॉट थे वो आपके मून पे गए. 2008 में इंडिया ने भी इसका एक्सपेडिशन स्टार्ट किया टू मून, जिसका नाम था चंद्रयान प्रोजेक्ट. चंद्रयान प्रोजेक्ट. Chandrayaan 1 is India's first ever mission to explore the moon. It was launched from the Satish Dhawan Space Center in Sriharikota on 22nd October 2008 by the PSLV C-11 space vehicle and reached the orbit of the moon on 8th November 2008. On November 11, it started revolving around the moon in a polar orbit of 100-kilometer height. On 14th November, it created history by separating the moon impact probe from the another vehicle and landing it near the south pole on the surface of the moon. अच्छा, चंद्रयान 1 इंडिया का पहला मिशन था टू एक्सप्लोर द मून. ये लॉन्च किया गया था आपके सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो आपके श्रीहरिकोटा में है. 22 अक्टूबर को किया गया 2008 में, एंड ये आपके पहुंचा था मून के ऑर्बिट में 8 नवंबर 2008 को. तो नवंबर 11 को इसने रिवॉल्व करना स्टार्ट कर दिया अराउंड द मून इन अ पोलर ऑर्बिट ऑफ 100 किलोमीटर हाइट. और 14 नवंबर को इसने हिस्ट्री क्रिएट की. कैसे? बाय सेपरेटिंग द मून इम्पैक्ट प्रोब फ्रॉम द मदर व्हीकल and landing it near the south pole on the surface of the moon. Chandrayaan 1 aims to study this neighbor of ours for the next 2 years by remote sensing with the help of 10 scientific equipments. The basic aim of this project is to enhance our knowledge about the only natural satellite of Earth, the moon. Besides, it also proposes to increase India's technological expertise in the field of space technology and to equip and enable the new generation Indian scientists to face fresh challenges in interplanetary researches. तो इसका जो बेसिक एम था वो ये था कि अपनी नॉलेज को इन्हेंस करना अबाउट द मून, जो कि इकलौता नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का. द स्टार्स. Haven't you seen a lot of twinkling stars in a clear night sky? It is really amazing to see the stars of different sizes, colors and varying brightness fill the sky. Don't you feel like the stars are pasted on the inner surface of a black hemisphere? Similarly, those who are at the other side of the world will also be able to see such a hemisphere. This imaginary sphere formed by joining the two hemispheres is a celestial sphere. All the stars seen in the celestial sphere are at different distances. The sun, which is the nearest star to Earth, is 15 crore kilometers away from it. This distance is known as astronomical unit. This unit is used to measure the distances from the sun to different planets. Another unit used to measure distance is light year. It is the distance that light can travel in a year. This would be 3 into 105 into 60 into 60 into 24 into 365 is equals to 9.46 into 1012 kilometer. Alpha Centauri, which is the nearest star to the Earth after the sun, is 4.3 light years away. Proxima Centauri is nearer but cannot be seen with naked eye as it is very faint. If you observe the stars scattered across the sphere carefully, can't you imagine some of shapes by connecting together the stars? देखिए आपके जो स्टार्स आपके सेलेस्टियल स्फीयर में ये डिफरेंट डिस्टेंसेस पे हैं. सन जो है आपका नियरेस्ट स्टार है, जो कितना दूर है आपसे 15 करोड़ किलोमीटर्स अवे. ये आपका जो है ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है. अब
जो दूसरी यूनिट है आपकी वो है आपकी लाइट ईयर, जिससे कि डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। अल्फा सेंचुरी आपका जो नियरेस्ट स्टार है आफ्टर सन, ये इसकी डिस्टेंस है 4.3 लाइट ईयर्स अवे। हालांकि जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है ये नेकेड आई से नहीं देख सकता क्योंकि ये काफ़ी फेंट है। Constellations, the star forming a group that has a recognizable shape is called a constellation. Constellations were devised by ancient people to be able to recognize the stars in the sky. Constellation एक्चुअल में आपका एक पैटर्न है, ग्रुप है आपके स्टार्स का जो एक recognizable पैटर्न बनाते हैं। तो कॉन्स्टलेशन को डिवाइस किया था एंशियंट लोगों ने। ओके, द shapes of constellation resemble objects familiar to those people. You can easily identify some constellations in the night sky. For this, you should know how a particular constellation looks like and where to look for it in the night sky. तो आप देखिए easily identify कर सकते हैं कुछ particular जो shapes होती हैं constellations की। Ursa Major or Great Bear. In Hindi, it is called Saptarishi because it consists of 7 stars. These 7 stars are so arranged that they form a pattern that resembles a bear. The 3 stars in the row represent the tail of the bear, and the quadrangle of 4 stars represents the body of the bear. The constellation is easily visible in the northern sky in the month of July and August. हिंदी में से सप्तऋषि कहा जाता है क्योंकि इसमें 7 स्टार्स होते हैं और ये इस तरह से अरेंज होते हैं कि ये बेयर का पैटर्न बनाते हैं, राइट। तो ये जो कॉन्स्टलेशन आपका ये ईजिली विजिबल होता है आपके जुलाई और अगस्त के मंथ में इन द नॉर्दर्न स्काई। Ursa Minor, Little Bear. In Hindi, it is called Laghu Saptarishi because it follows the same pattern as Ursa Major but is smaller in size. This constellation is of importance because of the pole star, which is one of its members. In Hindu mythology, it is also called Dhruv Matsya. The pole star in Ursa Minor can easily be identified either by identifying the Ursa Minor itself or with the help of 2 pointer stars of Ursa Major that always point towards the pole star as shown in figure. हिंदी में से लघु सप्तऋषि कहते हैं क्योंकि ये सेम पैटर्न फॉलो करता है जैसे कि अर्सा मेजर, बट ये उससे थोड़ा सा छोटा होता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पोल स्टार इसका एक मेंबर है। हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग इसको ध्रुव मत्स्य भी कहा जाता है। पोल स्टार जो आपका अर्सा माइनर में होता है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ईजिली, या तो अपने अर्सा माइनर को आइडेंटिफाई कर लिया या तो आप जो 2 पॉइंटर स्टार्स होते हैं अर्सा मेजर के उनकी हेल्प से कर सकते हैं। ओरियन, हंटर, मृग और व्यध। It resembles the shape of a hunter. It is easily visible during winter season. It consists of 7 bright stars. Out of the 7 stars, 4 are arranged in the form of a quadrangle. One of the largest of stars, Betelgeuse, is situated in one corner, while in the opposite corner is a star called Regal. The other 3 appear to be on a straight line in the middle of it. ये हंटर की शेप से मैच करता है, आपका रिजेंबल करता है और ये विंटर सीजन में आपको इजीली विजिबल होता है। इसमें 7 ब्राइट स्टार्स होते हैं जिनमें से आपके 4 जो स्टार्स होते हैं आपके एक क्वाड्रेंगल की फॉर्म में होते हैं। जो लार्जेस्ट स्टार्स है बेटलग्यूज, ये आपके एक कॉर्नर में सिचुएटेड है जबकि ऑपोजिट कॉर्नर में दूसरा है जिसका नाम है रिगल। Taurus, bull or wrish. It resembles the shape of a bull. It is easily visible in winter season. The pattern of arrangement looks like the front half part of a bull having horns. ये बुल की शेप से रिजेंबल करता है और ये विंटर सीजन में इजीली विजिबल होता है। जो पैटर्न जो अरेंजमेंट होता है इसमें होता है लाइक द जो फ्रंट हाफ होता है बुल का जिसके हॉर्न्स होते हैं। लिब्रा, तुला और तराजू. It resembles the shape of a simple physical balance. It is easily visible in winter season. It comprises of 4 bright stars arranged in the form of a quadrangle. The upper 2 stars represent the arm of the balance, while the lower 2 represent the pans of the balance. एक फिजिकल बैलेंस की शेप से रिजेंबल करता है, विंटर सीजन में इजीली विजिबल है। इसमें आपके 4 ब्राइट स्टार्स होते हैं जो क्वाड्रेंगल की फॉर्म में अरेंज होते हैं। जो अपर 2 स्टार्स होते हैं ये आर्म की बैलेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो 2 आपके लोअर होते हैं वो बैलेंस के पैंस को रिप्रेजेंट करते हैं। स्कॉर्पियो, वृश्चिक. It resembles the shape of a scorpion. It is easily visible in summer season. The pattern of arrangement consists of 7 bright stars that represent a scorpion with tail and pincers. ये स्कॉर्पियन की शेप से रिजेंबल करता है। ये आपको समर सीजन में इजीली दिखेगा। जो पैटर्न का जो अरेंजमेंट होता है इसमें 7 ब्राइट स्टार्स होते हैं जो स्कॉर्पियन को रिप्रेजेंट करते हैं टेल और पिंसर के साथ। Some common constellation. So here is a table given to you जिसमें आपके constellations के नाम है और हिंदी उनके नाम है। Solar system. Imagine that you are an astronaut living in the future doing research on a space stations in orbit around Earth. You have been working hard for a long time and need a vacation. Where will you go? How about a tour of the solar system? The solar system shown in figure is made up of 9 planets and numerous other objects that orbit the sun, all held in place by the sun's immense gravity.
The planets in the solar system revolve around the sun in elliptical orbits. The orbits of most of the planets are only slightly elliptical. They are almost circular. Pluto and Mercury have orbits that are more elliptical. The orbits are similar to a slightly flattened circle. Imagine कीजिए आप एस्ट्रोनॉट हैं और लिविंग इन द फ्यूचर, एक रिसर्च कर रहे हैं स्पेस स्टेशन में. अगर आप बहुत वर्क कर रहे हैं लंबे समय से, वेकेशन की ज़रूरत है, तो आप कहाँ जाएंगे? सोलर सिस्टम का टूर कैसा रहेगा? सोलर सिस्टम में आपके प्लैनेट्स हैं जो आपके 8 प्लैनेट्स से बना है, और भी बहुत सारे इसमें ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं. जो प्लैनेट्स होते हैं आपके सोलर सिस्टम के, वो सन के अराउंड आपके रिवॉल्व करते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट. तो जो ऑर्बिट होते हैं आपके बहुत सारे प्लैनेट्स के थोड़े से आपके इलिप्टिकल हैं, जो ऑलमोस्ट सर्कुलर. प्लूटो एंड मर्क्यूरी, इनके जो ऑर्बिट्स हैं ये आपके मोर इलिप्टिकल हैं. The planets. The planets look like stars, but they do not have light of their own. They merely reflect the sunlight that falls on them. Can you distinguish between planets and stars? The simplest method of identifying planets from stars is that stars twinkle whereas planets do not. Also, the planets keep changing their positions with respect to the stars. A planet has a definite path in which it revolves around the sun. This path is called an orbit. The time taken by a planet to complete one revolution is called its period of revolution. अच्छा देखिए, प्लैनेट जो है स्टार्स की तरह दिखते हैं, बट इनकी खुद की लाइट नहीं होती है. तो हम प्लैनेट्स को स्टार से कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? सबसे सिंपलेस्ट मेथड है कि स्टार्स ट्विंकल करते हैं जबकि प्लैनेट्स नहीं करते हैं. प्लैनेट्स अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्स. प्लैनेट का एक डेफिनेट पाथ होता है जिसमें वो रिवॉल्व करते हैं, जिसे कहा जाता है, और जो आपका एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो उनको टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन. Besides revolving around the sun, a planet also rotates on its own axis like a top. The time taken by a planet to complete one rotation is called its period of rotation. अच्छा देखिए, सन के अराउंड तो ये रिवॉल्व करते हैं, बट साथ ही अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करते हैं. एंड जो टाइम इनको लगता है एक रोटेशन कंप्लीट करने में, दैट इज कॉल्ड पीरियड ऑफ रोटेशन. Mercury. Mercury is the second smallest planet. Its surface has many craters. Craters formed when meteorites, which are chunks of rock or metal that fall from the sky, strike a planet's surface. Because of Mercury's small size and low gravity, gases that could form an atmosphere escape into space. The lack of an atmosphere and the closeness of this planet to the sun cause great extremes in temperature. Mercury's surface temperature can reach 425 degrees Celsius during the day and drop to 170 degrees Celsius at night, making the planet unfit for life. Mercury आपका second smallest planet है. इसके surface पे बहुत सारे craters हैं, right? तो क्योंकि मर्क्यूरी का साइज काफ़ी छोटा है, तो लो ग्रेविटी है, जिससे कि जो गैसेस है ना, वो एक एटमॉस्फेयर बनाती हैं एंड देन स्केप इनटू स्पेस. तो एटमॉस्फेयर की कमी की वजह से जो क्लोजनेस इस प्लैनेट की सन की, तो एक इसके टेम्परेचर में काफ़ी एक्सट्रीमनेस है. जैसे कि दिन के टाइम पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है एंड रात में देखिए कितना कम हो जाता है. Venus. The second closest planet to the sun is hard to see because its surface is surrounded by thick clouds. These clouds trap the solar energy that reaches the surface of Venus. That energy causes surface temperatures to hover around 472 degrees Celsius, hot enough to make a clay pot. ये second closest planet है sun के and is hard to see क्योंकि इसका surface जो है वो thick clouds से surrounded है. ये जो क्लाउड्स हैं ये क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं जो उसके सरफेस पे पहुंचते हैं आपके. तो ये जो एनर्जी होती है जिसकी वजह से सरफेस का टेम्परेचर जो है इतना हॉट हो जाता है. अर्थ. Earth is the third planet from the sun. You didn't realize how unusual your home planet was until you saw other planet. Earth's surface temperature allows water to exit as a solid, a liquid, and a gas. Also, ozone in Earth's atmosphere works like a screen to limit the number of ultraviolet rays that reach the planet's surface. Ultraviolet rays are harmful rays from the sun. Because of Earth's atmosphere, life can thrive on the planet. Earth आपका थर्ड प्लैनेट है सन से, एंड एक लौता ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है. यहाँ पे जो है आपका वाटर तीनों स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. इसके अलावा ओजोन की एक लेयर है जो सन की यूवी रेस से हमें प्रोटेक्ट करता है. मार्स. It is called Mangal in Hindi. It is the fourth and the last of terrestrial planets of the solar system with the two natural satellites called Phobos and Deimos. Its diameter is slightly more than half the Earth's diameter, but with a very thin atmosphere containing traces of gases like carbon dioxide, nitrogen, hydrogen, and oxygen. The oxygen present is too little to support life. The planet Mars from far appears reddish in color, hence it is called red planet. It is visible from the Earth for most part of the year, but the best time to observe it is when it is opposite to Sun with respect to the Earth. मंगल ग्रह भी कहा जाता है मार्स को, राइट और इसका जो इसके दो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं आपके फोबस एंड डियमस. इसका जो डायमीटर वो स्लाइटली मोर देन हाफ ऑफ द अर्थ डायमीटर है, बट इसका काफ़ी थिन एटमॉस्फेयर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के गैसेस के ट्रेसेस
पाए जाते हैं। तो ऑक्सीजन जो है वो लाइफ सपोर्टिंग गैस होती है, आपको पता है। तो जो प्लैनेट मार्स है वो दूर से रेडिश लगता है, तो इसीलिए इसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। Do you know what? Mars has seasons and polar ice caps. Scientists indicate that the planet once had abundant liquid water. Two Mars exploration rovers landed in January of 2004. Scientists hope to learn if water once existed on Mars, making it suitable for life. Mars में seasons भी हैं और polar ice caps भी हैं, तो ये इंडिकेट करते हैं कि प्लैनेट में एक टाइम पे लिक्विड वाटर था। तो बहुत सारे आपके जो अभी तक जो 2 मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर्स हुए हैं जो आपके लैंड हुए थे जनवरी 2004 में, तो साइंटिस्ट को उम्मीद है कि यहाँ पे जो है एक बार जैसे वाटर एग्जिस्ट करता था तो हो सकता है कि यहाँ पे भी लाइफ पॉसिबल हो। Jupiter is the largest planet in the solar system and the fifth from the sun. It also has the shortest day, less than 10-hour long, which means this giant planet is spinning faster than any other planet. Watch out for a huge red whirlpool near the middle of the planet. That's the great red spot, a giant storm on Jupiter's surface. Jupiter looks like a miniature solar system. It has 61 moons. जुपिटर जो है लार्जेस्ट प्लैनेट है और इसका शॉर्टेस्ट डे होता है आपका 10 घंटे से भी कम। इसका मतलब कि ये बहुत ही फास्ट रेट से स्पिन कर रहा है और इसके सरफेस पे रेड स्पॉट है जो कि एक जाइंट स्टॉर्म है जुपिटर के सरफेस पे। जुपिटर के 61 मून्स हैं, वन कॉल्ड गैनीमेड इज लार्जर देन द प्लैनेट मर्क्यूरी। तो जो गैनीमेड है इसका मून वो प्लैनेट मर्क्यूरी से भी बड़ा है। गैनीमेड along with 2 other moons, Europa and Callisto, might have liquid water under their icy crust. Another of Jupiter's moons, Io, has more active volcanoes than any other object in the solar system. Saturn is the 6th planet from the sun. Saturn's several broad rings are made up of hundreds of smaller rings, which are made up of pieces of ice and rock. Some of these pieces are like specks of dust. Others are many meters across. Saturn is orbited at least 31 moons, the largest of which is Titan. Titan has an atmosphere that resembles the atmosphere on Earth during primitive times. Some scientists hypothesize that Titan's atmosphere might provide clues about how life formed on Earth. Saturn आपका 6th planet है और इसमें आपके बहुत सारे रिंग्स हैं जो आपके बहुत सारे 100 ऑफ स्मॉलर रिंग्स से बने हैं जो कि आपके रॉक्स पीसेज हैं आइस के या रॉक के। तो कुछ इनमें से जो पीसेज हैं ये आपके लाइक स्पेक्स ऑफ डस्ट हैं और कुछ तो बहुत कुछ ही मीटर्स दूर होते हैं। तो सैटर्न जो है, सैटर्न के 31 मून्स हैं जिसमें से सबसे बड़ा है टाइटन। और टाइटन का जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से रिजेंबल करता है जो आपका प्रिमिटिव टाइम्स में था। तो कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि जो टाइटन का एटमॉस्फेयर है वो शायद कुछ क्लू प्रोवाइड कर सकता है कि कैसे लाइफ जो है अर्थ पे फॉर्म हुई। Uranus is the 7th planet from the sun. Uranus warrants a careful look because of the interesting way it spins around its axis. The axis of most planets is tilted just a little, somewhat like the handle of a broom that is leaning against a wall. Uranus is nearly lying on its side. Its axis is tilted almost even with the plane of its orbit like a broomstick lying on the floor. Uranus' atmosphere is made mostly of hydrogen with small amounts of helium and methane. The methane gives Uranus a distinctive bluish green color. Uranus has rings and is thought to have at least 21 moons. Uranus आपका 7th planet है एंड जो एक्सेस है ज़्यादातर प्लैनेट्स का वो टिल्टेड है थोड़ा सा, जैसे कि आपका एक हैंडल होता है ना ब्रूम का जो एक वॉल के अगेंस्ट लीन कर रहा होता है। तो यूरेनस जो है वो नियरली अपने साइड पे लाइक कर रहा होता है। इसका एक्सेस जो है टिल्टेड है ऑलमोस्ट इवन विद द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट, जैसे कि ब्रूम स्टिक आपका फ्लोर पे पड़ा हुआ है इस तरह से। तो यूरेनस का जो एटमॉस्फेयर है ये आपका हाइड्रोजन से बना है जिसमें थोड़ा बहुत अमाउंट हीलियम और मीथेन का भी है और मीथेन की वजह से इसका कलर आता है ब्लूइश ग्रीन। यूरेनस के रिंग्स हैं और इसके 21 मून्स हैं। Neptune is the 8th planet from the sun. Neptune's atmosphere is composed of hydrogen, helium and methane. The methane gives the planet a blue color. In 1989, Voyager 2 sent pictures of Neptune showing a grey dark spot in its atmosphere. The spot was gone when observations were made using the Hubble Space Telescope in 1994. Neptune is the last of the big gas planets with rings around it. It has 11 moons. अब जो फार्देस्ट प्लैनेट है आपका नेपट्यून का जो एटमॉस्फेयर है वो हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना है। मीथेन की वजह से इसका ब्लू कलर है। तो 1989 में जब वॉयेजर 2 ने इसकी पिक्चर सेंड की थी तो उसमें ग्रेट डार्क स्पॉट था इसके एटमॉस्फेयर में। फिर उसके बाद जब दोबारा ऑब्जर्वेशन हुई 1994 में तो स्पॉट गायब हो गया। तो आपका जो नेपट्यून है इसके 11 मून्स है।
Asteroids. Asteroids are pieces of rock made of minerals similar to those that form the rocky planets and moons. In fact, these asteroids might have become a planet if it weren't for the giant planet Jupiter. Jupiter's huge gravitation force might have prevented a small planet from forming in the area of the asteroid belt. अच्छा देखिए, जो asteroids हैं आपके pieces हैं रॉक्स के जो आपके मिनरल से बने हैं, ये सिमिलर हैं जो आपके जिससे रॉकी प्लैनेट्स और मून्स बने. इनफैक्ट ये जो एस्टेरॉइड्स हैं ये प्लैनेट बन सकते थे अगर इफ़ इट वरेंट फॉर द जायंट प्लैनेट जुपिटर, क्योंकि जुपिटर का जो ह्यूज ग्रेविटेशन फोर्स है उसने शायद इन स्मॉल प्लैनेट को इनको स्मॉल प्लैनेट बनने से प्रिवेंट किया. ओके, द एस्टेरॉइड्स ऑल्सो माइट बी द रिमेन्स ऑफ लार्जर बॉडीज दैट ब्रोक अप इन कोलिशंस. तो आपके जो एस्टेरॉइड्स हैं ये लार्जर बॉडीज के रिमेन्स है जो आपके कोलिशन में ब्रेकअप हो गए. The asteroid belt separates the solar system planets into two groups, the inner planets and the outer planets. अब ये जो बेल्ट है asteroid belt ये solar system के planets को दो groups में बांटती है, inner planets and outer planets. Comet. A comet is a large body of ice and rock that travels around the sun in an elliptical orbit. These objects are like dirty snowballs that often are between 1 and 50 kilometers across. Comets might originate in a cloud of objects far beyond the orbit of Pluto known as the Oort cloud. This belt is 50,000 AU from the sun. Some comets also originate in the Kuiper belt, which lies just beyond the orbit of Neptune. As a comet approaches the sun, solar radiation changes some of the ice into gas. Solar winds blow gas and dust away from the comet, forming what appears from Earth as a bright tail. Comet large body है ice and rocky, जो कि ट्रैवल करते हैं अराउंड द सन एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में. तो ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये होते हैं आपके जैसे लाइक डर्टी स्नोबॉल्स जो आपके 1 से 50 किलोमीटर्स अक्रॉस की दूरी पे होते हैं. तो कॉमेट जो आपके ओरिजिनेट हुए हैं आपके इन क्लाउड्स ऑफ ऑब्जेक्ट फार बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ प्लूटो, जैसे कि ऊट क्लाउड कहा जाता है. तो कुछ कॉमेट जो हैं ये आपके क्यूपर बेल्ट में ओरिजिनेट हुए हैं जो कि जो ऑर्बिट है नेपट्यून का उसके जस्ट बियॉन्ड है. तो जैसे ही आपके कॉमेट जो है सन की तरफ अप्रोच करते हैं जो सोलर रेडिएशन होता है आइस को गैस में चेंज कर देती हैं और जो सोलर विंड होती हैं वो ब्लो करती हैं गैस को और डस्ट को अवे फ्रॉम द कॉमेट, जिसकी वजह से हमें अर्थ से ऐसे नजर आता है जैसे कि इनकी ब्राइट टेल है. फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं पिक्चर में meteors. During some nights we can see certain objects in the sky burning down through the atmosphere. They are meteors. Can you guess why meteors burn down while falling through the atmosphere? कई बार कुछ नाइट आपको दिखेगा कुछ ऑब्जेक्ट जो है जो आपके एटमॉस्फेयर में आपको ऐसा लगता है दे बर्निंग डाउन, तो ये होते हैं आपके meteors. Artificial satellites. A heavenly body that revolves around a planet in its orbit is called a satellite. Example, Moon is a natural satellite of the Earth. The other planets in the solar system also have their own satellite. Saturn has a maximum number of satellites or moons. A satellite may be natural or artificial. The artificial satellites are man-made satellites that are launched into space by rocket to carry out the desired functions for the mankind. At present, only 6 countries in the world have technology for developing the artificial satellites. India has launched many satellites into the space like INSET, IRS and Rohini, etc. Aryabhatta was the first artificial satellite to be launched by India in 1975. एक heavenly body जो आपके प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करती है उसके ऑर्बिट में से कहा जाता है सैटेलाइट. जैसे मून जो है नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, बट इसके अलावा जो है काफ़ी सारे आपके आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी हैं. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं मैन मेड सैटेलाइट्स होते हैं जिनको स्पेस में रॉकेट्स के थ्रू लॉन्च किया जाता है और अभी तक जो है 6 कंट्रीज़ है जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है. इंडिया ने भी बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं लाइक दीज, और आर्यभट्टा तो सबसे पहला सैटेलाइट था जिसको इंडिया ने लॉन्च किया था इन 1975. Advantages of artificial satellites. The use of artificial satellites has greatly influenced the life of every individual. People have started calling the present age as spaces because of tremendous improvement in the quality of life by the use of artificial satellites. Important applications of artificial satellites include the following: satellite communication, weather monitoring, remote sensing, space exploration. तो देखिए कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में ये सैटेलाइट्स हेल्प करते हैं, वेदर मॉनिटरिंग में, वेदर फोरकास्टिंग में, रिमोट सेंसिंग में एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन में. नोट्स फॉर द चैप्टर. Mercury is extremely hot during the day and extremely cold at night. Its surface has many craters. Venus' size and mass are similar to Earth's. Temperatures on Venus are between 450 degrees Celsius and 475 degrees Celsius. Earth is the only planet known to support life. Mars has polar ice caps, channels that might have been carved by water, and the largest volcano in the solar system, Olympus Mons. Constellation is a small group of stars which appear in the form of closed group forming a recognizable shape or pattern. Asteroids are small planets like celestial bodies found revolving between the orbits of Mars and Jupiter.
चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.